The impact of voice in our daily life and English language is significant. ਵੌਇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੋਰ ਕਲੀਅਰ ਔਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and the right choice of voice can also impact the style and writing of the English language. So in this video I'll discuss about the topic of voice. Let's start. सब तो पहला असीं देखांगे कि टेंस और वॉइस दे विच की डिफरेंस है। जिवें कि टेंस डिस्क्राइब करदा आ टाइम ऑफ द एक्शन कि एक्शन दा जिहड़ा हैगा आ टाइम की आ जो भी वर्ब द्वारा डिस्क्राइब किया गया है वो पास्ट विच आ प्रेजेंट विच आ या फिर फ्यूचर दे विच आ। वेयर एज वॉइस की डिस्क्राइब करदी आ वॉइस सानू दसदी है रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द एक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। सो वॉइस की है रिलेशनशिप है तुहाडा सब्जेक्ट और एक्शन दे विच। क्लीयर। नैक्सट फस्ट ऑफ ऑल एक्टिव वॉइस की अगर गल करिए तो एक्टिव वॉइस की है एक्टिव वॉइस के केस दे विच सब्जेक्ट जिहड़ा हैगा आ सेंटेंस दा वो परफॉर्म कर रहा है एक्शन इस चीज़ नूं डिस्क्राइब किया जाता है वर्ब के द्वारा। क्लीयर। एंड इन केस ऑफ पैसिव की हुंदा है कि सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जिहड़ा हैगा आ वो रिसीव करता है एक्शन नूं जो कि डिस्क्राइब किया जा रहा है वर्ब द्वारा। क्लीयर। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव केस दे विच साडे कोल सब्जेक्ट हैगा आ द कैट एंड वर्ब इज एट एंड द ऑब्जेक्ट इज द माउस। द कैट एट द माउस। बट इन केस ऑफ अ पैसिव जदों असीं इसनूं कन्वर्ट करांगे तो तुहाडा ऑब्जेक्ट जिहड़ा हैगा आ वो सब्जेक्ट की जगह ते चला जाएगा और जिहड़ा सब्जेक्ट आ वो जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे। क्लीयर। एंड जो तुहाडी वर्ब आ वो चेंज हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दे विच। सो अपना सेंटेंस की हो जाएगा द माउस वॉज ईटन बाय द कैट। क्लीयर। नेक्स्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल रूल ऑफ द वॉइस चेंज। नंबर 1 रूल इज So rule number 1 is the object of the verb in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice. जो object आ active voice दे विच वो की बन जाएगा तुहाडा subject in case of a passive voice. Next rule number 2 is the subject of the verb in the active voice become the object in the passive voice generally preceded by the preposition by. So subject जो है तुहाडा एक्टिव वॉइस दे विच वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट दे विच इन केस ऑफ अ पैसिव वॉइस बट विद द हेल्प ऑफ प्रोसीड करेगा वो बाय दे नाल प्रपोजिशन वो दे विच यूज होएगी। क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 3 इज द मेन वर्ब इज चेंज इनटू द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जो तुहाडी मेन वर्ब है सेंटेंस दे विच ओनू तुसी चेंज कर दोगे थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब दे विच। क्लियर। नेक्स्ट रूल नंबर 4 रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग देखो while conversion of active voice sentence to passive voice sentence the pronoun used in the sentence also changes in the following manner। जदों असी कन्वर्जन करते हैं एक्टिव दी पैसिव दे विच जो pronoun यूज हो रहे ने उस सेंटेंस दे विच उन्हां दी आपस दे विच जो चेंजिंग हैगी है उहदा भी कोई मैनर। क्लीयर। देखो एक्टिव वॉइस दे विच अगर तुसी pronoun यूज कर रहे हो आई तो वो पैसिव वॉइस दे विच होएगा एज ए me। Clear। Similarly we become us, he, him, she, her, they, them, you and it। Clear। So there is a note except certain exemptions no passive voice formation for the following tenses can be formed। हाँ जी कुछ टेंसिस नूं छड्ड के बाकियां दे विच असीं एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन करते हैं। वो टेंसिस किहड़े ने जिन्हां दे विच तुहाडी एक्टिव टू पैसिव कन्वर्जन नहीं हुंदी। दीज आर द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर। नैक्सट देखो असीं एक क्विक ओवरव्यू लैंदे आ एक्टिव और पैसिव वॉइस दा वर्ब फॉर्म दे विच टेंसिस दे अकॉर्डिंग आपां किवें चेंज करना है एक्टिव नूं पैसिव दे विच। First of all, look at the simple present tense. As you know, simple present tense ਦੇ ਵਿੱਚ active case ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ first form of a verb ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बट जदों असीं उहनूं पैसिव दे विच कन्वर्ट करांगे
तो साडी जिहड़ी verb form है वो is am are plus third form of a verb ਉਹਦੇ ਨਾਲ change हो जाएगी. Clear? For example, he writes an essay. And in case of a passive, it will become an essay is written by him. Clear? An essay. It was a singular, so that's why we use is here. And the third form of write is written. And by is the preposition. And he changed into him. Next, second example is Sheena does the housework. So it will become the housework is done by Sheena. Clear? Next, in case of a present continuous, active voice ਦੀ form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ is am are ing plus first form of a verb, and in case of a passive it will become is am are plus being plus third form of a verb. Look at the example. They are eating bananas, and in case of a passive it will become the bananas are being eaten by them. Now look at the word bananas as it is a plural form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, so ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ use ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ are. Clear? And being according to the rule, and eat become the eaten because the third form of a eat is eaten, and by is the preposition and they become them. Clear? Look at the second example. Bob is drawing a diagram, and in case of a passive it will become the diagram is being drawn by Bob. Clear? Next, look at the present perfect tense. In case of a present perfect, साडा rule की है जी has, have plus third form of a verb. But in case of a passive it will become has, have plus been plus third form of a verb. For example, I have written a novel, and in case of a passive it will become a novel has been written by me. A novel singular form ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, so ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ has ਲਗਾਵਾਂਗੇ. Been according to the rule, and write become the written, and by is your preposition and I becomes me. Next, second example, she has finished the job. In the passive it will become the job has been finished by her. Clear? Next, simple past tense. Simple past tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ active voice ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ second form of a verb. And in case of a passive ਸਾਡਾ rule ਕੀ ਹੋਏਗਾ was verb plus third form of a verb. Look at the example. I wrote a letter, and in case of a passive it will become a letter was written by me. Clear? For number 2, you missed the chance, and in case of a passive it will become the chance was missed by you. Clear? Next, past continuous tense. Past continuous tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ was verb plus first form of a verb and ing. But in case of a passive ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ change ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ rule ਕੀ ਹੋਏਗਾ was verb plus being plus past participle form of the verb. Clear? Example देखो, I was learning my lessons. ਇਹ active case ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, simple past ਦੇ ਵਿੱਚ, और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ passive ਦੇ ਵਿੱਚ convert ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ my lessons were being learned by me. My lessons plural form ਆ, so ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ were ਦਾ use ਕੀਤਾ. Clear? Next, according to the rule, learn become learned, and by according to the preposition and I become me. Second example, he was writing a report, and in case of a passive a report was being written by her. Next, past perfect tense. Past perfect tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹਾਂ had plus third form of a verb. And in case of a passive ਕੀ ਹੋਏਗਾ had और been ਦਾ use ਹੋ ਜਾਏਗਾ, and next ਤੁਹਾਡੀ third form of a verb as such. Look at the example. I had finished the project, and in case of a passive ਕੀ ਹੋਏਗਾ the project had been finished by me. Clear? Next, second example, she had learned her lessons, and in case of a passive
her lessons had been learned by her. Clear? Now simple future tense ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ will shall plus first form of a verb, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, will shall plus be plus third form of a verb. For example, I will finish the job, and in case of a passive, the job will be finished by me. Second example, she will solve the problem. The problem will be solved by her. Clear? Next, future perfect tense. Future perfect tense का rule देखो, will shall plus have plus third form of a verb. Active case ਦੇ ਵਿੱਚ पर ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ passive ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, will shall plus have plus been plus third form of a verb. Clear? For example, I will have finished the job, and in case of a passive की बनेगा, the job will have been finished by me. Clear? Next, she will have solved the problem, and in case of a passive, the problem will have been solved by her. Clear? Next, look at the rules of imperative sentences. Imperative sentences ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਾਲੇ sentences ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ command, request ਜਾਂ advice ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? For example, orders, request, advices, etc. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ sentences ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ imperative sentences. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ let word ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕਲੀਅਰ? ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, shut the door ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, the let the door be shut. Next, rule number 2, if the sentence begin with the please, अगर तुसी request कर रहे हो active voice ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ passive ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ, you are requested to. ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ passive voice ਦੇ ਵਿੱਚ use ਹੋਏਗਾ. ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ intransitive verb ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ change ਕਰਦੇ ਹੋ passive voice ਦੇ ਵਿੱਚ, you are requested to, and another form of the passive is with the verb should and be. For example, look at the example. Please do not smoke. Passive, you are requested not to smoke. Please go there. You are requested to go there. Keep your word. Your word should be kept. So voice ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਕਲੀਅਰ? ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਪਲੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਦ ਲਾਈਕ ਬਟਨ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਿਸ ਚੈਨਲ. ਥੈਂਕ ਯੂ.